So ABCD type of questions, what does it mean? Uh, it is those questions which have like A reacts with B reacts with C, and C reacts with D, and so on like that, है ना? So we are going to look at those type of questions. So there was a question asked in 2020. Now this is from the chapter haloalkane halorine, but it can have some other questions also, like combination हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? So they are saying identify A, B, C, D, E, and F in the following. Now they have given us a starting point. The starting point that we have here is a haloalkane. CH3, CH, CH2, CH3, and Br. So we have a haloalkane here. Now let us look and try to form a compound. सबसे पहले I'll make this compound. You have 1, 2, 3. You're having 1, 2, 3, 3 carbon atoms. There's a carbon atom here, that is CH3. And we have Br here. So in order to make A, I need alcoholic KOH. I hope this is easy reaction. Alcoholic KOH. Now what will we get? क्या मिलेगा? Alcohol मिलेगा, carboxylic acid मिलेगा, ketone मिलेगा, aldehyde मिलेगा, alkene मिलेगा, alkyne मिलेगा, alkene मिलेगा. What should we get when we react with alcoholic KOH? Tell me in the chat, please, quickly. What should we get when we are reacting with alcoholic KOH? जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी. Mixture of answers are coming here, but Hiram, you are correct. Ether, see, I don't know where you are looking, Mariam. Alcoholic KOH is going to give you alkene, है ना? Alcoholic KOH, aqueous KOH, अगर आपको याद है दोनों में फर्क क्या होता है? It is a question also in haloalkane halorine chapter. Why aqueous KOH gives alcohol? Why alcoholic KOH gives alkene? याद रखना चाहिए आप लोग को. You'll have the same number of carbon atoms, and there will be a double bond between alpha and beta. Okay, so you'll have this is the alpha carbon, this is the beta carbon. In दोनों के बीच में double bond हो जाएगा. Dehydrohalogenation. Fine. After that, it is saying we are reacting with HBr. We are reacting with HBr. Now HBr, it is not in the presence of any peroxide or any heat or any radical. So what will happen? The bromine will attach to that carbon atom which has less hydrogen. So if you count the number of hydrogen atoms here and here, this carbon atom, it has 0 hydrogen. This carbon atom here, it has 2 hydrogen. So obviously it is going to attach on carbon atom which is having 0 hydrogen. So you'll have 1, 2, 3. You'll have one methyl group here, and the Br will attach here like this. Then it is saying it reacts with sodium in the presence of dry ether. That is a Wood's reaction, sodium in the presence of dry ether. So what will happen? You will get the same molecule. You'll draw this molecule one more time like this, and you will join these two. ठीक है? या फिर आप इसको ऐसे बनाइए. Draw the same compound without the bromine. Draw the same compound without the bromine. This carbon atom had bromine. This carbon atom had bromine. You just need to join these two carbon atoms. अब इसके बाद if you draw, if you are going to leave it like this also, that's also fine. But लेकिन अच्छा तो इसको presentable कर दीजिए आप. So how many carbon atoms? 1, 2, 3, 4 carbon atoms. इसको आप ऐसे कर लीजिए. 1, 2, 3, 4 carbon atoms. Second carbon atom is having 2 carbons. Third carbon atom is also having 2 carbon atoms. So this is the C structure. ठीक है? ये आपका starting material था. This is your alcoholic KOH के बाद this is A, this is B, and this is C. Then इधर आते हैं अगर हम Mg in the presence of dry ether. थोड़ा छोटा किया जा सकता है इसको.
Mg in the presence of dry ether. So what is going to happen? 1, 2, 3, Br, one methyl group here. You will get Grignard reagent, MgBr like this. In the presence of water, it is going to get converted into alkene. Alkene ban jayega. So you'll have this alkene like this. After this, we have sodium. Sorry, we have sodium ethoxide. देखिए जरा. We have sodium ethoxide. अब इसके रिएक्शन से बताइए क्या मिलेगा? What will we get when we react haloalkane with sodium ethoxide? As it gives some answer, what type of compound will we get? It is a name reaction, by the way. It is a name reaction. This is Williamson ether synthesis. This O will attack onto this primary carbon atom. The compound you will get is CH3, CH, CH2, the CH3 here as it is. And here you will have OC2H5. So this is the F structure. This is your D structure. This is your E structure. Make sense, everyone? Yes or no? Please tell me. हाँ जी बताएं. Yes or no, guys? Any doubts here? Please let me know. Okay, fine. You can copy this down. Let me know if you have any doubt while I'm looking for another question. Now, there will be a series of questions like this. Most of the questions you will get will be from the aldehyde ketone carboxylic acid chapter. ठीक है? See, next question. An organic compound X with molecular formula C5H10O. Now, looking at the molecular formula, tell me whether this can be alcohol or ether, or it can be aldehyde और कीटोन. बताइए क्या हो सकता है? 5 कार्बन एटम का एल्डिहाइड या फिर एल्डिहाइड बनाइए, कीटोन बनाइए, 5 कार्बन एटम का अल्कोहल बनाइए. सो इफ अल्कोहल
नीड्स 10 कार्बन एटम्स, अल्कोहल हो जाएगा, नहीं तो फिर एल्डिहाइड या कीटोन होगा. Looking at the molecular formula, you should have some idea. That is why I'm trying to tell you guys to do this. ट्राई कीजिए, ये हमने कराया था ना एक बार क्लास में, हमने कराया था, है ना. ठीक है, यस करेक्ट, फाइन. नॉट लुकिंग एट द क्वेश्चन राइट नाउ, है ना. We are not looking at the question right now. We are just looking at the molecular formula and trying to identify whether it's going to be alcohol ether or aldehyde ketone. What about others? जल्दी आंसर करें. डेबोरा, इरम, मरियम. सी प्लीज डोंट राइट द क्वेश्चन. इन सब चीजों पे टाइम वेस्ट प्लीज नहीं करें. प्लीज ट्राई टू टेल मी whether it is going to be aldehyde ketone or alcohol ether. कौन से क्लास का कंपाउंड होगा? अरे यार गाइस, क्विकली प्लीज. यू कैन राइट 5 कार्बन एटम्स और कितने हाइड्रोजन होंगे ना, अगर अल्कोहल बना के देखिए आप. 5 कार्बन एटम. डेबोरा, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई यू आर नॉट आंसरिंग? डेबोरा, व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग? यस डेबोरा. ओके, एल्डिहाइड की एल्डिहाइड कीटोन सर. सो हाँ, चैट में लिखिए. इरम, व्हाट हैपेंड? सी प्लीज रेज योर हैंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ऐसा हो सकता है. यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. प्लीज रेज योर हैंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. If you understand, you should answer. Huh? Safia, what happened? Safia, Mariam Parker, Safia and Parker. Okay, fine. नहीं, ठीक से लिखिए जरा मरियम. Parker, can you please turn your mic on? Parker, can you please turn the mic on? So, जी बताइए. How have you written this? कैसे आपने आइडेंटिफाई किया? That's alcohol ether. Hmm? Yes, Parker, your mic is off. जी. अरे भाई, तुक्का लगाया आपने. अरे बोलो, जल्दी बोलो ना. ऐसी गेस, you guessed it. no, I thought we had to make the structures for both, but we had to make like C5H10 का structure. So, कीप योर माइक ऑन ना. माइक क्यों ऑफ हो जाता है आप लोगों का आधे बात में? पार्कर, टेल मी व्हाट आर यू सेइंग? I thought we had to make structures for both, but so I made for both. स्ट्रक्चर्स फॉर? We have to make structures for both. नो, आई एम नॉट आस्किंग. हाँ, वही तो पूछ रहा. ठीक है, देखिए. व्हाट आई एम आस्किंग इज, दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है पार्कर, कीप योर माइक ऑन प्लीज. Yes, sir. नाउ इफ दिस इज द फॉर्मूला एंड वी हैव वन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन या तो अल्कोहल ईथर में होता है, एक ऑक्सीजन की बात करें हम, या तो एल्डिहाइड कीटोन में होता है ना. अल्कोहल एंड ईथर, दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ये एक दूसरे के आइसोमर होते हैं. तो इनका अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट भी हुआ तो फॉर्मूला सेम रहता है. एल्डिहाइड कीटोन भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं. ठीक है. नाउ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इट विल करस्पॉन्ड टू अल्कोहल ईथर में से किसी एक का, या फिर एल्डिहाइड कीटोन. हाउ विल यू नो दैट? यू विल मेक 5 कार्बन एटम्स. ठीक, 5 कार्बन एटम, और उसमें आप लगा दीजिए OH. ठीक. नाउ यू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. 5 कार्बन एटम जोड़ लिया आपने, 5 है ना. नाउ यू काउंट द हाइड्रोजन. यहाँ पे आपके पास कितने? 3. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन. ठीक. हाउ मेनी टोटल हाइड्रोजन यू आर हैविंग? यू आर हैविंग 3, 3, 6, And 10 and 12. So obviously C5H10O cannot be alcohol or ether. It will be aldehyde or ketone. Make sense, Parker? yes. यही करना है आपको, है ना. व्हेन आई विल आस्क यू गाइस टू डू दिस ना, कि अल्कोहल ईथर या एल्डिहाइड, तो यही करना है आपको. ठीक है. बट देखिए, हम आपको जनरल फॉर्मूला ही बता देते हैं. जनरल फॉर्मूला बहुत आसान है. अल्कोहल या ईथर के लिए जनरल फॉर्मूला होता है, अल्कोहल ईथर के लिए इट इज CnH2n+2 और फिर एक ऑक्सीजन लगा हुआ होगा. एल्डिहाइड कीटोन के लिए क्या होगा? एल्डिहाइड कीटोन विल हैव CnH2nO.
ठीक है, तो जस्ट बाय लुकिंग एट द फॉर्मूला यू विल नो दैट इट इज एल्डिहाइड और कीटोन. चलिए मूविंग ऑन. इट इज सेइंग इट फॉर्म्स अ 2,4-DNP रिएजेंट. तो सबसे पहले X फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव. दैट मीन्स 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करता है, मीनिंग X इज एल्डिहाइड और कीटोन. इससे भी हमको वही पता चल रहा है, X इज आइदर एल्डिहाइड और कीटोन बिकॉज ओनली द carbonyl compounds react with 2,4-DNP reagent. And 2,4-DNP reagent, it is a test to identify the carbonyl compound and distinction for carbonyl compound. And it is saying that it does not reduce tolerance reagent. Does not reduce tolerance reagent. हमारे पास अगला इंफॉर्मेशन है, does not reduce tolerance reagent. मतलब क्या होगा इसका मीनिंग? टेल मी इन द चैट. एल्डिहाइड है या कीटोन है? What type of compound does not reduce tolerance reagent? Aldehyde or ketone? Yes, very good. Very good. It is meaning it is what? Ketone. It is ketone. ठीक है. अब आगे वो क्या कह रहा है? They are saying, but gives positive iodoform test on heating with I2 in the presence of NaOH, है ना? तो iodoform test देता है ये. Meaning X gives iodoform test. क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि X has CH3 C डबल बॉन्ड O फ्रैगमेंट. ठीक है. नाउ उसके बाद CH3 CO सी डबल बॉन्ड मिल गया. दैट मींस यू कैन ऑलरेडी गेट द कीटोन. द कीटोन इज गोइंग टू बी 5 कार्बन एटम्स और यहाँ पे इसके सी डबल बॉन्ड लगा होगा, है ना. दिस इज द X. ये आपके पास दिस इज द X कंपाउंड. देन इट इज सेइंग कंपाउंड X गिव इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन. ठीक है, ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन. तो विग्रस ऑक्सीडेशन में ऑब्वियस सी बात है, लाइक इफ यू आर डूइंग KMnO4 एंड विद हाई हीट, तो आपके पास दिस बॉन्ड विल break like this. This bond can also break like this. ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड. सो यू आर गोइंग टू गेट, ये ऐसे करके जब ब्रेक करेगा, यू हैव सी डबल बॉन्ड O OH प्लस 1 2 3 कार्बन एटम COOH, है ना. तो यू गेट मल्टीपल कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन oxidation of ketone and there will be those will be smaller carboxylic acid, है ना. Bonds will be broken. They are saying that write the structure of the X compound. You have written that write the structure of the product obtained when X reacts with 2,4-DNP reagent. So we have, this is the ketone plus 2,4-dinitrophenylhydrazine. Anyone remembers the structure? किसी को structure याद है? बताइए. Now you know that you have to also remember the structures for these type of compounds. 2,4-DNP हो गया, hydrazine हो गया. Then you have what? You have cyanohydrin. You have to remember the structure of cyanohydrin. Then all the nucleophilic addition reaction जो भी होता है ना, ठीक है, तो आपको उन सबका स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए. इफ यू डोंट रिमेंबर तो उससे कुछ ना कुछ आपको फिर मिस होने के चांसेस ज्यादा है. व्हाट डू वी हैव हियर? कंपाउंड X reacts with 2,4-DNP reagent. So we have 2,4-dinitrophenylhydrazine. Please write the structure here. You have NH2 होता है, which is having a single bond with NH. This is having a bond with phenyl, which is having NO2 in the fourth position and the second position like this. ठीक है. Now when you will make this compound, the compound will look something like this. यहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा यहाँ से आपको, and you will have N करके बॉन्ड होगा. But how will you write this? आपको ऐसे लिखना पड़ेगा. 1 2 3
4 1 2 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। 5 कार्बन एटम्स, हियर वी हैड अ डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा, यू विल हैव नाइट्रोजन, ठीक है। 2 हाइड्रोजन निकल गए, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, देन यू हैव अगेन a single bond with nitrogen which is having ये NH है आपके पास, like this you can write the compound, ठीक है। इसके like for these type of questions you need to practice। इसके बाद क्या कहा इन्होंने, the structure of product, they are also asking the structures of products obtained when you react this X compound with in the iodoform test. So you'll have double bond I2 in the presence of NaOH. तो यहाँ से आपके पास you will have CHI3, that is the iodoform, plus you will have 1 2 3 4 carbon atoms carboxylic acid. The carboxylic acid will be in the carboxylate form because we are having basic condition. So COOH नहीं होके COONA होगा, plus you will have NaOH. You don't even need to write NaOH. मेजर आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको लिख लीजिए, काफी। Moving on, another question. An alkene A with molecular formula C5H10, C5H10 on ozonolysis gives mixture of two compounds B and C. Compound B gives positive Fehling test and also reacts with iodine and NaOH solution. Compound C does not give Fehling solution test but forms iodoform. That means it gives iodoform test. Identify the compounds A, B and C. ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत आसान सवाल है। You have A, that is alkene. Alkene के ozonolysis से when you react this with ozone and second is ZnH2O करते हैं आप second step में, then you'll get B and C. Both B and C will be either aldehyde or ketone. B के बारे में उन्होंने बोला है that B gives positive Fehling test and also reacts with iodine. B क्या करता है, it gives Fehling test also and it reacts with I2 also, ठीक है। I2 के साथ react करता है, I2 के साथ react करता है और B gives positive Fehling test and also reacts with iodine. तो iodine के साथ Fehling test देता है, that means it is what, aldehyde, CHO है। और I2 के साथ react करता है, that means it is having this fragment CH3 C double bond O. तो C double bond O भी है और इसमें aldehyde भी, that means there is only one option कि CH3 CHO हो। Make sense? Yes or no? Please tell me. That B can be only acid aldehyde, that is aldehyde with 2 carbon atoms. Fehling test दे रहा है तो क्या होगा, aldehyde होगा, और I2 दे रहा है तो that means it should have CH3 C double bond O fragment. Now C double bond O में आप यहाँ पे कार्बन नहीं लगा सकते because it is giving Fehling test. So it can be only this aldehyde. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. हाँ जी बताएं। Yes or no? Make sense? No, no, ketone does not give Fehling test ना, ketone नहीं देता है, only aldehydes, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बोला उन्होंने, कंपाउंड सी डज नॉट गिव Fehling टेस्ट बट फॉर्म्स आयोडोफॉर्म। कंपाउंड सी जो है ये Fehling टेस्ट नहीं देता, दैट मीन्स इट इज कीटोन, Fehling टेस्ट बट फॉर्म्स आयोडोफॉर्म, पर ये क्या करता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। सो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू हैव दिस फ्रैगमेंट CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे फिर क्या होगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर कीटोन एंड दिस इज योर एल्डिहाइड, ये B और C मिल गया आपको। नाउ यू नीड टू नो व्हाट इज द एल्कीन। तो एल्कीन के लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों के ऑक्सीजन एटम को हटा के दोनों को कंबाइन कर दो, ठीक है। सो यू हैव CH3 CH without the oxygen atom you have written and just below it you will write this carbon atom which was having oxygen और इसके अगल बगल में क्या है, CH3 CH3। remove the double bond O and just add a pure alkene double bond। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 carbon atoms, 1 2 3 4 carbon atoms
you'll have double bond here. Second carbon में कुछ नहीं है. Third carbon में you will have one CH3. And as you can see, if you are going to break this oxygen, then it is going to give you double bond O, which will have hydrogen, plus you will have 1, 2, 3 carbon atoms, double bond O. This will give Felling test as well as iodoform test. This will not give Felling test, but it will give the iodoform test. Okay. So since they have not asked any reaction, you can just work around this problem as he. Yes, sir. Like you have to just work around it. ठीक है. Exact आपको reactions यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है. You will just say now that this is your A compound, this is your B compound, and this is your C compound. ठीक है. Just write A, B, C ऐसे. ठीक है. See this for a while. If you have any doubt, please let me know. Okay. Everything makes sense, yes or no? Shavez, Deborah, Iram, Mariam, and Shahid. Hanji. Yes or no? Please tell me in the chat quickly. Make sense? Then the other question is A, B, C are three non-cyclic functional group isomer of carbonyl compound. ठीक है, दोनों पहले ही बोल दिया carbonyl compound with molecular formula C4H8O. Isomers A and C give positive tolerance test, whereas B does not give tolerance test but gives iodoform test. Isomer A and B on reduction give the C. I think ये सवाल हम लोगों ने किया था, चलिए फिर भी देख लेते हैं. C4H8O isomer A है आपके पास, B है आपके पास और C है आपके पास. तो A, B, C के बारे में व्हाट आर द प्रॉपर्टीज उसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट. ठीक है. सो A के बारे में ये कह रहे हैं A and C give positive tolerance. This give tolerance test. This also give tolerance test. That means this is aldehyde and this is also aldehyde. ठीक है. But in C बस इतना ही लिखा है ना. B does not give tolerance test. This does not give tolerance test. That means it is ketone. ठीक है. और फिर उन्होंने बोला आइसोमर्स A and B on reduction with ZnHCl give the same product D. When these two react with ZnHg in the presence of HCl, they give the same product. ठीक है. Now C4H8O में if I talk about ketone, तो कीटोन सिर्फ एक ही हो सकता है. This is the ketone that is possible. ठीक है. This is the only ketone possible. तो जो B होगा, B का स्ट्रक्चर तो यही हो जाएगा. तो क्या आप अगर देख ले, अगर आप ब्रांचिंग कर देंगे इस तरह से, तो आप कहाँ कीटोन डालिएगा? डोंट हैव एनी प्लेस टू ऐड कीटोन. Ketone can be not be on the terminal carbon. No. Ketone does not, all the ketone does not give iodoform test. Iodoform test is given by anything which is having CH3 C double bond O fragment. ये fragment जिसके पास भी होगा, aldehyde के पास भी हो सकता है ना, या CH3 CHO. ठीक है. तो you can see this B compound ketone. Tolerance test नहीं देता है. ठीक है शायद. Now, see, if you are going to do any branching, na, branching करने से you will not be able to draw ketone because ketone cannot be on terminal carbon. और ये जो बीच वाला carbon, it is already having 3 bonds. You cannot have double bond O. So the B compound is for sure. Just give me a second here. Let me share. Okay. Now, in terms of A and अच्छा, और जब A की बात हो रही है, they are saying that A is an aldehyde and it is giving the same product on ZnHgHCl. So when you react this with ZnHg in the presence of HCl, you will have 4 carbon atoms. तो जो A का स्ट्रक्चर होगा, it will have the same kind of branching. तो A के लिए 1, 2, 3, 4 carbon atoms CHO in the presence of ZnHg and HCl, it is also going to give you the 4 carbon atoms. और रही बात अब C के लिए, like what is the C? तो C will have 3 carbon atoms. There will be a branching और फिर CHO लिख सकते हैं आप यहाँ पे. So this is the C aldehyde. ठीक.
नाउ राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी तो हो गया हमारे पास, दिस इज द डी स्ट्रक्चर आई थिंक, है ना, SL प्रोडक्ट डी। आउट ऑफ ए बी सी isomers, which one is the least reactive towards addition of HCl? This is nucleophilic addition reaction. The nucleophilic addition reaction में aldehydes are more reactive than ketones, है ना? तो आपको बोला है least reactive कौन होगा, तो least reactive will be B structure, ठीक है? So right, B is least reactive. As it is a ketone, मतलब as it is लिखने की भी आपको जरूरत नहीं है, आपको ना कोई रिएक्शन लिखने की जरूरत है, ठीक है? You just need to identify the structures of A, B, C and D and then tell which is least reactive. Now moving on to another question. एक बार देख लीजिए इस सवाल को। I hope you guys are clear with this. Moving on. A and B are two functional isomers of compound C3H6O. On heating with NaOH and I2, isomer B forms yellow precipitate iodoform, whereas A does not form any precipitate. Write the formula A and B. बहुत ही आसान है। C3H6O, ठीक है? So it is saying B gives iodoform test. तो क्या मतलब होगा? It is having CH3 C double bond O fragment, है ना? CH3 C double bond O है, and it is also having 3 carbon, so the third carbon atom will be what? CH3 itself, है ना? ये कार्बन किसके साथ ज्वाइन होगा? CH3 के साथ, हाइड्रोजन के साथ तो ज्वाइन हो नहीं सकता है, ठीक है? बिकॉज 3 कार्बन एटम चाहिए आपको। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द बी बिकॉज इट इज गिविंग आयोडोफॉर्म टेस्ट। अच्छा, ए डज नॉट फॉर्म एनी प्रेसिपिटेट, दैट मींस ए डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। का मतलब ये हुआ इट इज हैविंग सी डबल बॉन्ड ओ इन द लास्ट कार्बन एटम, है ना? दो ही तरह के कार्बन एटम, फर्स्ट या सेकंड आप कार्बन बोल सकते हैं, तो सेकंड में तो डबल बॉन्ड लगा दिया आपने, देन यू विल पुट CH3 CH2 C double bond O and then hydrogen. Now this is not having this carbonyl group, it is not having any methyl group attached to it, that is why it will not give. So this is the B structure, this is the A structure. हमने मेरी कितना एक एल्कीन C4H10 और C5H10 वाला कब का था वो सवाल? जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलिए आपको दिखाते हैं कितने सिमिलर सवाल आते हैं। मतलब देखिए, an alkene with molecular formula C5H10 on, an alkene with molecular formula on, person is give two mixture, two compounds B and C. Compound B gives swelling test and also reacts with iodine and NaOH solution. Compound C does not give swelling. Laugh. यहाँ पे आप लोग को हंसने का मौका मिला है, ठीक है ना? 2019 2023 कितना ही फर्क है दोनों में, है ना? इट्स दी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। तो केमिस्ट्री में चीज ये है कि आपको ना बहुत ज्यादा अलग सवाल नहीं बन सकता, खासतौर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लाइक वॉट एवर जो भी क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, वही क्वेश्चन दोबारा आने वाले हैं, ठीक है? सवाल बन सकते हैं बट रेयरली स्पीकिंग। 2023 में बस एक सवाल ऐसा था जो कि बिल्कुल नया था, उस जैसा मतलब वो सवाल नहीं पूछा गया था पहले। ऑलमोस्ट ऑल दी अदर क्वेश्चन दे हैव बीन ऑलरेडी आस्क्ड, या फिर वो बिल्कुल टिपिकल, मतलब ऐसा मेन मेजर क्वेश्चन था जो आप लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है? देखिए बिल्कुल ही सेम सवाल, तो PYQs तो बिल्कुल करके जाइएगा, है ना? चलिए मूविंग ऑन। चलिए देखिए, जैसे आपके पास ये सवाल है इसको करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8O2। अब यहाँ पे आपका थोड़ा दिमाग चमकना चाहिए। C5H8O2,
C5H8O2 is reduced to N-pentane with hydrazine. It is reduced to N-pentane, normal pentane with hydrazine, followed by heating with NaOH and glycol. ठीक है, तो ये आपका रिडक्शन हो रहा है. A forms dioxine. क्या बनाता है? डाइऑक्साइन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन एंड गिव्स अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म एंड टॉलेंस टेस्ट. आयोडोफॉर्म भी टेस्ट दे रहा है और टॉलेंस टेस्ट भी दे रहा है. और C5H8 एंड O2 है आपके पास. ठीक है, अब जब O2 आया तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि व्हाट डज इट मीन. इज इट carboxylic acid या is it a compound that is having C double bond O two times. ठीक है, now if you see here what it is saying, this line is important. ठीक है, इस लाइन को देखिए आप. एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड में 3 ऑक्सीजन होते हैं शाबाश. एनहाइड्राइड it has 3 ऑक्सीजन एटम्स. ये होता है ना एनहाइड्राइड, है ना. ठीक है, कोई बात नहीं, होता है. ठीक है, वो ऐसा सवाल आप लोगों को नहीं मिलेगा बिल्कुल. आप जो बहुत ज्यादा हाईफाई सवाल सोच रहे हो वैसा नहीं मिलेगा. ठीक है, इट reduced टू एन पेंटेन विथ हाइड्रोजीन फॉलोड बाय हीटिंग विथ NaOH एंड ग्लाइकोल. अगर आपको याद हो, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ओनली. उसके बाद बोल रहा है ए फॉर्म्स डाइऑक्साइन. डाइऑक्साइन मतलब दो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, दोनों ही के दोनों ऑक्साइन बना रहे हैं, सो द कंपाउंड इज डाइऑक्साइन. सो दीज टू थिंग्स आर सेइंग. डाइऑक्साइन का मतलब देयर आर टू सी डबल बॉन्ड ओ, दो सी डबल बॉन्ड ओ है आपके पास. अच्छा, ब्रांचिंग की अगर हम बात करें देन वी कैन से दैट इट डज नॉट हैव एनी ब्रांच. आपके पास 5 कार्बन एटम्स है बिकॉज इट इज गिविंग यू नॉर्मल पेंटेन. व्हाट आर द ऑप्शंस यू कैन हैव? आपके पास हो सकता है सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यू कैन हैव लाइक दिस, और यू विल हैव 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स. यहाँ पे CHO और हियर आल्सो CHO, दोनों एल्डिहाइड. या फिर आपके पास क्या हो सकता है? यू विल हैव 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स, देयर इज 1 CHO और आपके पास एक कीटोन है. और यू कैन, मतलब अलग अलग हो सकता है ना, हम सारे ऑप्शंस अभी आपको देंगे नहीं. ठीक है, मतलब सारे ऑप्शंस लेने की जरूरत भी नहीं है आपको. आप लोग यहीं से कंपाउंड बनाते जाएंगे, है ना. यू विल बी मेकिंग कंपाउंड्स. गिव्स फॉलोड बाय NaOH एंड ग्लाइकॉल फॉर्म्स एंड गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म. क्या दे रहा है देखो, बहुत ध्यान से देखना. इट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म एंड टॉलेंस दोनों दे रहा है. दैट मीन्स दिस कंपाउंड A has CH3 C double bond O fragment and is also aldehyde. तो भाई देखो, अगर इसकी वजह से एल्डिहाइड होगा देन इट विल बी हैविंग सी डबल बॉन्ड ओ और एक हाइड्रोजन होके बात खत्म. इसके आगे तो कंपाउंड हो बनेगा ही नहीं. इफ इट इज गिविंग टॉलेंस टेस्ट बिकॉज ऑफ दिस CH3 C डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोजन से अगर जुड़ा रहता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इफ इट इज गिविंग एल्डिहाइड, दैट मींस दैट कार्बन एटम, दैट कंपाउंड शुड हैव ओनली 2 कार्बन्स. बट दैट्स नॉट द केस. 5 कार्बन एटम है वहां पे. सो इफ इट इज हैविंग 5 कार्बन एटम्स, इसका मतलब ये है कि आपके पास 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स है. एक आपको सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे ऐसे है एंड देन यू हैव CHO हियर लाइक दिस. दिस इज द एल्डिहाइड. मेक सेंस? चलो प्लीज टेल मी. This is the compound that we are looking for. देख लीजिए किसी को कुछ डाउट हो तो. I was saying that you have to tell, give its reaction with iodoform. For iodoform के लिए जो रिएक्शन होगा इसमें will have NaOH in the presence of I2. तो आपके पास 1 2 3 4 कार्बन एटम्स
you'll have, ठीक है, हम इससे से बना दे रहे हैं बिकॉज लिखने में आसान होती है। 4 कार्बन एटम्स है ना। सी हियर दिस कार्बन कार्बन विल आल्सो ऑक्सीडाइज बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हैं। दिस पर्टिकुलर कार्बन कार्बन विल आल्सो बी ऑक्सीडाइज। ये भी आपका क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों कार्बन कार्बन विल बी ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्ट लिखना है दैट इज गोइंग टू बी दिस CH3 बन जाएगा ये, प्लस, अच्छा दिस विल नॉट बी ऑक्सीडाइज ना बिकॉज इसके पास CH3 नहीं है, सो यू कैन जस्ट राइट 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, COO NA, और यहाँ पे आपके पास C डबल बॉन्ड O और इधर H, द एल्डिहाइड इज एज इट इज लाइक दिस, यू कैन राइट। उसके बाद है आपके पास आयोडोफॉर्म एंड टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट के लिए दिस इज माय कंपाउंड। टॉलरेंस टेस्ट के लिए व्हाट इज द रिएजेंट दैट आई हैव टू पुट, टेल मी गाइस। हाँ जी, टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है, AG होता है या फिर आपके पास CU होता है, AG या CU? हाँ AG। ठीक है, तो आप AG प्लस लिख दीजिए, काफी है। ठीक है, यू जस्ट राइट AG प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, यू विल हैव C डबल बॉन्ड O विल बी एज इट इज, COO नेगेटिव या फिर COOH बन जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, प्लस विल हैव AG दैट विल बी डिपॉजिटेड एज सिल्वर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो प्रेसिपिटेट दैट इज येलो। चलिए मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चंस। ये भी सवाल हम लोगों ने किया हुआ है क्या, C4H8O, एक था ना सवाल C4H8O, 3 कंपाउंड्स वाला था। ठीक है चलिए, an organic compound A having molecular formula C4H8O gives orange red precipitate with 2,4-DNP reagent, है ना, that means it is either aldehyde or ketone. It does not reduce tolerance reagent but gives yellow precipitate of iodoform on heating with NaOH and I2. That means 4 carbon atoms है, does not reduce tolerance reagent, that means it is a ketone, है ना। A is ketone, तो कीटोन के लिए 4 कार्बन आइटम में यू हैव ओनली वन ऑप्शन, यू हैव दैट इज ब्यूटेन 2 ऑन। कंपाउंड A ऑन रिडक्शन विद NaBH4 गिव्स कंपाउंड B। आप इसका रिडक्शन करें, आप अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे NaBH4, यू विल गेट ब्यूटेन 2 ऑन, यहाँ पे आपको OH मिल जाएगा। ठीक है, which undergoes dehydration reaction on heating with concentrated H2SO4 to compound C, you have OH, इसमें आप डालिए H2SO4, तो आपको मिलेगा ब्यूटेन 2 ऑन एज द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज सेट्जेफ रूल, more substituted alkene is the major, this is the compound C। compound C on ozonolysis gives 2 molecules of ethanol, है ना। इसमें बेसिकली अगर आप ओजोनोलिसिस कर लें तो ऑक्सीजन हियर, ऑक्सीजन हियर। ठीक है, पहले स्टेप में O3, सेकंड स्टेप में जिंक एंड H2O, यू विल गेट 2 कार्बन एटम्स CH3 CHO, 2 मॉलिक्यूल्स का मिलेगा, हियर आल्सो एंड हियर आल्सो इट्स द सेम थिंग। आइडेंटिफाई A B and C, write the reaction of compound A with NaOH and NaBH4, NaOHI2, अच्छा वो यहाँ से बन सकता है, to be CHI3 प्लस 1 2 3 4 कार्बन एटम्स COONA, है ना। आपके पास A स्ट्रक्चर ये है, दिस इज योर A, और B आपके पास कौन सा है, NaBH4 के बाद B मिलता है, दिस इज B, और कंसिडर H2SO4 के बाद C मिलता है, दिस इज C। ठीक है, सो वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, A B C हमने आइडेंटिफाई कर लिया है।
ठीक है, चलिए मूविंग ऑन. Write the structure of A, B, C, D, E in the following. So C6, H6, that is benzene, anhydrous AlCl3 के presence में CH3 COCl. That means you will be getting benzene ring में, चलिए बेंजीन, ये पहला रिएजेंट है ना, पहले रिएजेंट से आपको मिलेगा C double bond O CH3, acylation, Friedel Crafts acylation. This is your A structure. उसके बाद A से D और E बन रहा है NaOI डालने से, उसके बाद ZnHg B की तरफ जाते हैं हम भी, है ना, फिर बाद में जाएंगे उधर नीचे. आपको क्या डालना है, ZnHg और HCl. तो this will convert to alkene. C double bond O किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में कन्वर्ट होता है. So you'll get two compounds, like sorry, two carbon atoms. Then it is saying that you react this with KMNO4, KMNO4, KOH, H3O plus. This is a drastic condition for oxidation. This will convert to कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा आपके पास. NaOI, सोडियम हाइपोहलाइड. दिस इज बेसिकली आयोडोफॉर्म टेस्ट. आयोडोफॉर्म टेस्ट में आपके पास इस कार्बन से आयोडोफॉर्म बनेगा CHI3 प्लस, you will have the benzene ring, the carbonyl compound, the carbonyl group here will be as it is, O negative or Na positive. ठीक है, make sense everyone? This is A, this is B, this is C, this is D and E. रिडक्शन अगर आप लोगों को याद है, रिडक्शन में हम लोगों ने दो रिएक्शंस पढ़े थे. रिडक्शन में वी टॉक्ड अबाउट क्लीमेंसन रिडक्शन, जो कि आपका ZnHg है, एंड वॉल्फ किस्नर में आपके पास हाइड्रोजीन, उसके बाद KOH NaOH से रिएक्ट कर देते हैं. ठीक है, दिस इज क्लीमेंसन रिडक्शन. ना, मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, देखते हैं और कुछ सवाल है. क्वेश्चंस तो आर देयर. क्वेश्चंस आर देयर. अब PYQ अगर कर लेंगे ना, तो फिर बी वेरी इजी फॉर यू गाइस. और चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज ही कीजिए. ठीक है, सी है ABC. ठीक है, C6H5 Br में अगर आप Mg डालेंगे, देन यू विल बी हैविंग MgBr लाइक दिस. उसके बाद अगर आप क्या डाल रहे हैं इसमें, CO2. ठीक है, और H प्लस, क्या मिलेगा, कुछ याद है आपको? CO2 क्या मिलना चाहिए? ऑब्वियसली इट विल बी फ्रॉम दी मेथड ऑफ प्रिपरेशन. किसी के मेथड ऑफ प्रिपरेशन से होगा ये, है ना. इतना कम से कम आपको समझ में आना चाहिए. दिस विल बी फ्रॉम दी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ समथिंग. किसी को आया याद? कोल बेस्ड रिएक्शन नहीं भाई, कोल बेस्ड रिएक्शन फिनॉल के साथ होता है. इट इज विद फिनॉल. दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन, COOH. Now when this will react with PCl5, the OH will be converted to Cl. C double bond O, Cl. ठीक है, CH3CN SnCl2. So the A compound will be CH3 CH2 NH2. This is A. You react this with dilute NaOH. बताइए NaOH डलेगा तो क्या होगा? अच्छा, SnCl2 के बाद we have hydrolysis also, ना, just give me a second.
एक सेकंड, दिस विल नॉट बी द प्रोडक्ट. SnCl2 plus HCl. अच्छा, this is Stephen's reduction. Stephen reduction में here you will be getting CH3, C double bond O and H. My bad. ठीक है. और नाइट्रो ग्रुप में अगर आपके पास SnCl2 होता then you will get amines. This is Stephen reduction. Stephen reduction में you will be getting aldehyde. After this you have dilute NaOH. NaOH में आपको मिलेगा aldol condensation. So aldol condensation कैसे होता है? Aldol condensation में you have to have CH3, C double bond O, hydrogen ether. Then you will expand the alpha carbon like this. CH2 will be as it is. This hydrogen will go there, and you will get CH3 carbon OH. This hydrogen as it is, C, the two hydrogen as it is, and CH. Then on heating, this is your B product. On heating, what will happen? This H2O will be removed. So you have 1, 2, 3, 4 carbon atoms with CHO and a double bond here. ठीक है. So this is aldol condensation. Dilute NaOH में aldol condensation. Moving on to see if we have any more questions. सो एबीसी टाइप का आप एक सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज 2023 में लाइक सी ऑल ऑफ दीज एबीसी आर नॉट फ्रॉम सिंगल पेपर. 2023 में देयर वर मल्टीपल पेपर्स मेड ना, तो सब में अलग अलग एबीसी टाइप के सवाल थे. ठीक है. So here they are asking an organic compound A with molecular formula C4H8O2 undergoes acid hydrolysis to form two compounds B and C. Oxidation of C with acidified potassium permanganate also produces B. अच्छा. Sodium salt of B on heating with soda limes give methane. Identify A, B and C compound. This I would say that ये थोड़ा सा it is a tough nut to crack, है ना. तो थोड़ा दिमाग लगाएं आप लोग. क्या लगता है आपको? C4H8O के बारे में सबसे पहले आपको बताएं. C4H8O दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो इट कैन बी आइदर कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर ईस्टर का केस हो सकता है ना. C4H8O में देखिए आप 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, COOH. हियर वी हैव 3 हाइड्रोजन्स. यहाँ पे आपके पास 2 है, यहाँ पे आपके पास 2 है और यहाँ पे आपके पास 1 है. हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? 3 4 5 6 7 और 1 8. ठीक है. तो ईस्टर के केस में भी यही होता है. सेम थिंग हैपेंस इन द ईस्टर्स आल्सो. अब बात यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का और एसिड हाइड्रोलिसिस क्या ही होगा. लाइक इफ यू हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कुछ होगा ही नहीं आगे, बिकॉज इट इज ऑलरेडी एन एसिड. बट इफ यू टेक द केस ऑफ ईस्टर, तो ईस्टर का एसिड हाइड्रोलिसिस आई होप यू गाइस शुड रिमेंबर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? यू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्रेक होता है, CO बॉन्ड इज ब्रेकिंग एंड यू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज अल्कोहल. ठीक है. ये दोनों कंपाउंड्स आपको मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल. नाउ वी हैव टू सी कि ईस्टर कहाँ पे. यू हैव C4H8O, तो आपके पास ये भी हो सकता है दैट यू आर हैविंग C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन एंड देन यू आर हैविंग 1 2 कार्बन एटम्स लाइक दिस. ठीक है. एंड इज देयर एनी अदर केस दैट इज पॉसिबल? One more case is possible, or it can be like this: 3 carbon atoms here, C double bond O and OCH3. ठीक है. So these are the only two possible esters that we can have. The only two possible esters that we can have. ठीक. अब समझ लीजिए जरा यहाँ पे. It is saying that it forms two compounds B and C. Oxidation of C with acidified potassium permanganate also gives produce B. अच्छा. तो यहाँ पे देखिए this line. It forms B and C. Oxidation of C with acidified potassium permanganate also produces B. ठीक है. आपको पता है कि इन दोनों को जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो यू विल गेट अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक.
अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. यू विल गेट, इफ यू ऑक्सीडाइज अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, KMnO4. KMnO4 क्या है आपके पास? इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अल्कोहल ऑक्सीडाइज कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. दैट वी नो दैट. एंड इट इज सेइंग ऑक्सीडेशन ऑफ सी. ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? सी का. अल्कोहल सी है, ऑल्सो प्रोड्यूसेस बी, कार्बोक्सिलिक एसिड बी है. मेक सेंस? yes or no? Please tell me guys, does this make sense? बोलिए कि अल्कोहल कौन सा है और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है. टेल मी इन द चैट गाइस. ऑक्सीडेशन ऑफ सी विद एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट ऑल्सो प्रोड्यूसेस बी. ठीक है, तो एक चीज तो हमें ये पता चली कि सी के ऑक्सीडेशन से बी मिल रहा है, तो सी अल्कोहल होगा और बी क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, बिकॉज दीज आर दी प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर दी हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. ईस्टर के हाइड्रोलिसिस है ना. ए को आपने क्या कराया? ए को आपने हाइड्रोलाइज कराया H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो आपको बी और सी मिला. ठीक. अगली चीज, और एक चीज हमें ये पता चल सकती है, हम बोल सकते हैं that alcohol when it is oxidized to carboxylic acid, then the carbon atoms don't change, the number of carbon atom does not change. ठीक है, तो अगर C से B बन सकता है, that means C and B are having same number of carbons. तो सेम नंबर ऑफ कार्बन तो तभी पॉसिबल है जब आपके पास ये कंपाउंड हो, बिकॉज दिस कंपाउंड इट विल ब्रेक लाइक दिस. और यहाँ पे दो कार्बन आटम का कार्बोक्सिलिक एसिड और दो कार्बन आटम का अल्कोहल मिलेगा. इफ यू आर गोइंग टू टेक दिस कंपाउंड, तो यहाँ पे ऐसे ब्रेक होके एक, this cannot give you carboxylic acid. So the A compound that we are having, it is going to be like this: 1, 2, C double bond O, oxygen, and then two carbon atoms, H plus in the presence of H2O, C double bond O, OH, plus two carbon atoms, OH. ठीक. So this is your A, this is your B, and this is your C. Out of B and C, which will have higher boiling point, give reason. B और C में किसका boiling point ज्यादा होगा? Obviously, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बिकॉज इट फॉर्म्स डाइमर, है ना. बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग, देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स टेकिंग प्लेस, इतना स्ट्रॉन्ग होगा दैट इट फॉर्म्स डाइमर. दैट इज व्हाई इट विल बी हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट. एक बार देखिए, डज दिस मेक सेंस? इसमें भी सेम. ठीक है, एक बार देख लीजिए आराम से. अनदर क्वेश्चन. There are a few questions that has been asked in the sample paper. ठीक है, देखिए जरा. Sample paper में generally what I have seen is the questions are a bit more tough than what is asked in the examination. ठीक है, सो सैम्पल पेपर आपको प्लीज कर लिया कीजिएगा, तो थोड़ा टफ सवाल, नए सवाल आपको करने में आसानी होगी. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H6 ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4 containing mercuric sulfate gives compound B. If you look at the formula, it is a hydrocarbon, and it is a hydrocarbon. It is neither alkene nor alkene, it is alkyne, है ना. So A is alkyne. ठीक है, and it reacts with mercury sulfate to and gives compound B. It is giving a compound B. This compound B can also be obtained from a reaction of benzene with acetyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? A, it is giving me a product B on what? On hydration, है ना. We are doing H2O. देखिए क्या कर रहे हैं हम? ट्रीटमेंट विद H2SO4, H2H plus और Hg
2+ के presence में it is giving me B. They are saying that B can also be obtained from reaction of benzene C6H6 with acetyl chloride CH3COCl in the presence of AlCl3. तो यहां से आपको क्या कंपाउंड मिलेगा? बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O CH3. ठीक है, Friedel-Crafts acylation of benzene तो यही कंपाउंड देगा. So this is your B compound. They are saying that B can also be obtained from here. ठीक है. After that they are saying B on treatment with I2 in aqueous KOH gives C yellow compound B. ये सारी चीजें आपको पता है कि इसको अगर आप NaOH और I2 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो आपको मिलेगा CHI3 प्लस यू विल गेट बेंजीन रिंग. और इसमें COONA. CHI3 कौन सा बोला उन्होंने? विद I2 gives C and a yellow compound D. So this CHI3 is D और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? C हो जाएगा. आइडेंटिफाई A B C D, गिव द केमिकल रिएक्शन. तो A B C D तो हो गया. A वी डोंट नो A राइट नाउ. तो A इज गोइंग टू बी एल्काइन, है ना? और एल्काइन कैसा होगा? बेंजीन रिंग, कार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड CH. दिस इज योर A, दिस विल बी योर एल्काइन. द कार्बन एटम्स तो चेंज होते हैं. फिर आस्किंग गिव द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व. यहाँ पे आपके पास लिख सकते हैं आप H प्लस और Hg2+ के प्रेजेंस में इट इज गोइंग टू गिव यू C डबल बॉन्ड O CH3. ये बात देख लीजिए. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो. चलिए, moving on. This was also there in sample paper. Hydrocarbon with molecular formula C5H10 और उसको किया है क्या हम लोगों ने? C5H10 gives BC, both BC gives yellow precipitate. C5H10, 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 C5H10. Compound B gives. यहाँ पे both नहीं, एक सेकंड, दोनों आयोडोफॉर्म दे रहे हैं. यस, बोथ आर गिविंग आयोडोफॉर्म टेस्ट ना. ये वही सवाल है वापस से भाई. वंस अगेन वही सेम थिंग. Both BC gives yellow precipitate, but B gives silver emeritus with tolerance. Same चीज है, हटाओ इसको, है ना. Not important. I already done this one. अगला जो सवाल है, that is a bit, can be a bit scary, but ध्यान से देख के इसको कर देंगे हल्के हल्के, आराम आराम से. An organic compound A with molecular formula C2Cl3O2 is obtained when B reacts with red phosphorus and Cl2. Okay. The organic compound B can be obtained on the reaction with methyl magnesium chloride with dry ice followed by hydrolysis. ये ध्यान से देखिए. Methyl magnesium chloride, dry ice followed by acid hydrolysis. ठीक है. The compound B can be obtained on the reaction of methyl magnesium chloride. Methyl magnesium chloride is CH3 MgBr. What is dry ice, guys? Dry ice क्या होता है? ड्राई आइस क्या होता है? हाँ, वेरी गुड शाबाश. और किसी को पता है ड्राई आइस क्या होता है? व्हाट इज ड्राई आइस?
आना आना चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए। व्हाट इज ड्राई आइस? शायद पहला ही वाला सही था आपका, दूसरा वाला गलत है। ड्राई आइस गाइस, ड्राई आइस। सिर्फ सावेज का आंसर आया और किसी को नहीं आ रहा। व्हाट इज ड्राई आइस? ओह माय गॉड, किसी को नहीं आ रहा। ड्राई आइस इज CO2 गाइस, CO2 होता है। ठीक है, सो यू कैन, व्हेन CO2 रिएक्ट्स, फिर उसके बाद में आप हाइड्रोलिसिस कीजिएगा, देन यू विल गेट CH3COOH। ठीक है, CH3COH। नाउ दे आर सेइंग दैट एंड दिस इज योर कंपाउंड बी। ठीक है, कंपाउंड बी मिल गया आपको। कंपाउंड बी को रिएक्ट कराना है किस से? रेड फास्फोरस एंड Cl2 से, सो यू विल गेट दिस कंपाउंड। व्हाट इज दिस हैपनिंग? ये CH3COOH in the presence of red phosphorus and Cl2। ध्यान दीजिएगा। Now this carboxylic acid, it is having alpha hydrogen, और ये red phosphorus in the presence of Cl2, this is what Hell-Wohl-Hart Zelinsky। याद है आप लोगों को? एक रिएक्शन था ना, हेल-वोल-हार्ट जेलेंस्की रिएक्शन। हेल-वोल-हार्ट जेलेंस्की में क्या होता था कि जो आपके पास हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है, उसमें क्या लग जाता था? हाइड्रोजन लग जाता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट CH2, COOH विल बी एज इट इज। ठीक, और इस क्लोरीन में क्या लग जाएगा? क्लोरीन, सॉरी, इस कार्बन में क्लोरीन लग जाएगा। नाउ दिस इज स्टिल हैविंग व्हाट? अल्फा हाइड्रोजन। दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस वंस अगेन, और एक बार और हो जाएगा। जब ये रिएक्शन दो बार और हो जाएगा, देन यू विल बी हैविंग व्हाट प्रोडक्ट? यू विल बी हैविंग carbon which is having 3 chlorine atoms followed by COOH। So this is your A structure। Make sense everyone? Yes or no? Please tell me। हेल-वोल-हार्ट जेलेंस्की रिएक्शन में व्हाट हैपेंस? वहां पे आपके पास अल्फा कार्बन में क्लोरीन लगता है। क्लोरीन मतलब कोई हाइड्रोजन लगता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन लगेगा, देन इफ देयर इज स्टिल एनी अल्फा हाइड्रोजन, तो फिर वहां पे फिर से लग जाएगा, एंड इट विल बी कीप ऑन एडिंग अंटिल अनलेस और सारे हाइड्रोजन वहां से खत्म नहीं हो जाए। ठीक है, चलिए सी हियर। दे आर आस्किंग राइट ऑन द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A फ्रॉम B, व्हाट इज दिस रिएक्शन कॉल्ड? तो ये HVZ रिएक्शन है, हेल-वोल-हार्ट जेलेंस्की। ठीक, गिव वन मेथड बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड B कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स करस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, इसके एसिड क्लोराइड, इसका एसिड क्लोराइड बना दो। अच्छा, सो यू विल हैव CH3COCl। ठीक है, CH3COCl से कैसे बनाइएगा कार्बोक्सिलिक एसिड? टेल मी गाइस। बोलो भाई, एसिड क्लोराइड में क्या करते हैं? आसान सा रिएक्शन है, कुछ नहीं करना होता है। तो बेस डाल के पानी डाल दी, या फिर पानी डालिए सिर्फ हाइड्रोलिसिस। हाँ बस, बेसिक हाइड्रोलिसिस से थोड़ा सा फास्ट होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ पानी में डालेंगे तब भी हो जाएगा। CH3COOH है ना, Cl की जगह आपको क्या चाहिए? OH चाहिए ना, तो OH डालिए। ठीक है, विच विल बी मोर एसिडिक, कंपाउंड A या कंपाउंड B बताएं? CH3COOH इज मोर एसिडिक, या फिर Cl3CCOH इज मोर एसिडिक? A या B, कौन एसिडिक है ज्यादा? मिथाइल मैक्सो, हाँ माय बैड, माय बैड, ब्रोमाइड लिख दिया हमने, सॉरी, क्लोराइड होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मरियम। बट आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी इफेक्ट ना, वो हैलाइड होता है जनरली। हाँ ठीक है, शाविज करेक्ट। यस मरियम, आपको समझ में आ रहा है ना कि अगर ब्रोमाइड भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता रिएक्शन में, बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हैलाइड कुछ भी हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। यस ना, ठीक है। A is going to be more acidic. Why? Because it is having a large number of electron withdrawing groups. ठीक,
राइट ऑन द रिएक्शन टू प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम द कंपाउंड बी। मीथेन बनाना है हमें। मीथेन बनाने के लिए अगर आपको याद हो सोडा लाइन का यूज कर लेते हैं। CH3COH, इसको पहले आप NaOH से रिएक्ट कराइए एंड यू विल हैव CH3C डबल बॉन्ड ONA, एंड इसमें फिर आप क्या लाइए सोडा लाइन। सोडा लाइन क्या होता है NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यू विल गेट CH4, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। So you are going to expect ABC type of questions from aldehyde ketone से ज्यादातर, है ना? Aldehyde ketone से ज्यादा chances है ABC type के questions आने के, because most of the questions are from this chapter only. लास्ट ईयर का जो बात करें, लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए ना उसके मुताबिक नाउ आई एम लुकिंग एट, चलिए नाउ आई एम लुकिंग एट सम क्वेश्चंस फ्रॉम द amines chapter. By the way, the book I am using, it is called MTG MTG Champion, chapter wise and topic wise. ठीक है, this is available in Amazon. You can also buy the Kindle version. ठीक है, Kindle version सस्ता है थोड़ा सा, and if you study and if you don't get distracted, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए तो ज्यादा अच्छा Kindle version ही है ना, ताकि हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं तुरंत. I will screenshot the question and share it with you. ठीक है, सो हाउ आर यू लाइक इट, दिस रियली गुड बुक आई वुड से, है ना? ये आप मतलब सैम्पल पेपर और ये सारी चीजों को करने से पहले प्लीज ट्राई टू डू ऑल द पीवाई क्यूज करेंगे तो बहुत आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं. ठीक है, इट हैज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. अगर आप देखिएगा कि ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम एवरी चैप्टर. 100 सवाल, 100 सवाल बहुत होते हैं भाई, है ना? अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम ईच चैप्टर. तो उसमें सारे के सारे कवर्ड है, एमसीक्यूज भी हैं. देन यू हैव दी assertion रीजन क्वेश्चंस, दोज आर नॉट सेपरेटेड बट हाँ टॉपिक वाइज है सारे के सारे. ठीक है, सो इवन इफ यू हैव डन ओनली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ सर्टेन टॉपिक तो आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं. नॉमेनक्लेचर किया नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं. ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए आपको सारा प्रैक्टिस करना ओनली नॉमेनक्लेचर, तो आप सारे चैप्टर का सिर्फ नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं. ठीक है, चलिए. कंपाउंड ए ऑन रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप and hydrochloric acid gives compound V with molecular formula C6H7N. So C6H7N is obviously going to be what? C6H7N है आपके पास, तो ये बेसिकली क्या होगा? This is going to be अमीन. ठीक है, और अमीन आप सी ऐसे लीजिए C6H5 कर लीजिए अगर, तो आपको क्या मिल रहा है? बाकी नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन मिल रहा है ना? तो दिस इज C6H5NH2, मिल गया आपको कंपाउंड, है ना? ये क्या हो जाएगा आपके पास? ए कंपाउंड नहीं, दिस इज कंपाउंड बी, दिस इज बी. Compound B on reaction with CHCl3 and alcoholic KOH produces an obnoxious smell of carbylamine due to the formation of C. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है? क्लोरोफॉर्म CHCl3 in the presence of KOH. तो इससे मिलता है आपको कार्बाइलामीन रिएक्शन. कार्बाइलामीन रिएक्शन में क्या होगा? यू विल गेट CN, कार्बाइलामीन. ठीक है, CN मिलेगा. दिस इज योर कंपाउंड C. ए बी सी लिखिए. अच्छा, ए बस हम लोगों ने नहीं लिखा है. व्हाट इज ए? A is going to be nitro compound because nitro compound Fe or HCl के presence में gives amine. So A is going to be a nitro compound like this in the presence of Fe and HCl. It gives amine. So this is your A structure. See the next question. Here we are having an organic compound C3H7NO. अब यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है. Any idea what this compound can be? कौन सा कंपाउंड हो सकता है?
टेल मी गाइस, C3H7NO, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं ना। ऑन हीटिंग विद ब्रोमीन एंड KOH फॉर्म्स द कंपाउंड बी। ठीक, Br2 और KOH, Br2 और KOH अगर आपको याद आ रहा हो, दिस इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड, ब्रोमोमाइड वाला रिएक्शन है। सो C3H7 विल बी व्हाट, इट विल बी ब्रोमोमाइड, 3 कार्बन atoms, CONH2, it reacts with Br2 in the presence of KOH। तो क्या मिलेगा आपको कंपाउंड, दिस इज कंपाउंड A reacts with, and it is going to give compound B। compound B क्या होने वाला है, it is going to be 2 कार्बन atoms and NH2, Hoffman bromide degradation, the CO is vanished। And on heating with CHCl3 and alcoholic H produces false smell, NH2 होगा, my bad। and CHCl3 chloroform KOH के presence में it is going to give you 1 2 कार्बन atoms और NC, है ना, NC that is having a foul smell। So this is A, this is B, and this is C। On reacting with C6H5SOCl2, this is Hinsberg reagent, it forms a compound D which is soluble in alkali। तो एड ऑन सी नहीं, बी को रिएक्ट कर रहे होंगे ना, कंपाउंड बी ऑन हीटिंग एंड ऑन रिएक्टिंग। हाँ, कंपाउंड बी व्हेन इट इज रिएक्टेड विद SOCl2 हिंसबर्ग रिएजेंट, तो आपको मिलता है बेंजीन रिंग दैट इज रिटन एज PH, C डबल बॉन्ड O, sorry, S double bond O, S double bond O, N which is having 1 hydrogen, and here it is going to have CH2 CH3। ठीक है, so this is the compound that we are getting D after the reaction with Hinsberg reagent। You write this down। सो वी हैव डन इनफ ABCD टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई थिंक सारे ही हो गए लगभग जितने भी थे PYQs में आए हुए। ठीक है, सो 1 2 3 4, एक ही चीज का कितने अलग अलग सवाल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15। ठीक है, सो यू हैव डन अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस। 15 सवाल काफी है इससे। ठीक है,